Okay, so a brief recap of what we did in the last session. We covered impacts of climate change, and we saw that it was because of the presence of greenhouse gases that the Earth's temperature is holding at a comfortable level, and it has become inhabitable for various species to thrive on it. Then we had a look at the events. So there was rapid events and there were slow onset events, depending on what timeline do they play on. And impacts, we had seen direct impacts which were manifested in terms of changes in temperature or rainfall or sea level rise. There were indirect impacts also, which were basically manifested in terms of social, environmental, or economic changes that we observe as a result of the climate event. Then we observed the global changes. We've seen various graphs, how temperature, rainfall, glaciers are changing and sea level is rising. And over Indian region, we specifically monitor these parameters. We found that temperature on an average, all the temperatures are increasing. Rainfall, though, is not showing any significant trend, but the frequency of extreme weather events has increased. Small glaciers are fast retreating, and sea level rise is showing an increasing trend. And we also saw that air quality recently has become a focus area for climate change. Why? Because air quality has got some climate outcomes also, so it interferes in the entire feedback mechanism. So this has also become a focus area. And the last one was, we saw that if you want to tackle climate change and its impact, then what are the range of actions you need to take from ranging from global level to local level. Now today what we'll do is we have seen the changes in these climate parameters, and it is very clear that the globe is warming. So in this session today, we are going to, first thing is we're going to focus on policy, how climate policy has evolved. And our focus today would be at international level only. National level, India, what is doing at national, subnational level, that we covered in session 4. So the climate changes that we spoke about last time, now were these changes noticed and talked about over a period of time over which they have played? Were these changes scientifically analyzed? Was there a forewarning or some suggestion on what to do in case you want to stop these extreme changes to happen? And what was done at international level? So today we are going to address these 4 questions. What was done, maybe we are going to focus only on international level today. We step down to national level in the next session. So I start with Giddens paradox, which is famously applicable, which is a very famous paradox, which was given by Anthony Giddens and very much applicable to climate change. He's the author of a famous book, The Politics of Climate Change, which came out in 2009. And he says that since the dangers posed by climate change are not tangible, immediate or visible in the day-to-day life, जो changes हो रहे हैं, जैसे glacier retreat कर रहा है या gradually हमारा temperature बढ़ रहा है या sea level gradually rise कर रहा है, because they're not tangible, we cannot observe them in day-to-day life. However awesome they appear, many will sit on their hands and do nothing of a concrete value about them. हो रहा है, but do we act on it? Mostly people don't. Yet waiting until they become visible, जब तक कि उसके manifestations शुरू होंगे and acute before being stirred to serious action, will by definition be too late. It means this is what we are seeing right now. I've forgotten the name. Somebody asked a question last time कि जो हमने code red बोल रहा है latest IPCC का report, was it told earlier? This has been spoken about, as we'll see, since 1970s and 80s. But till the time these impacts have become very much on our face, उसके बाद we are straight into serious action. लेकिन तब तक क्या होगा? Because the process is such कि if you make those changes, they play out over 10s and 20s and 30 decades, over decades. So the taking a late action is actually it is too late if you wait for these impacts to come. This is called Giddens paradox. Now, were the changes noticed and talked about? So, this environmental advocacy basically started in 1960s. There's a famous book called Silent Spring by Rachel Carson. It came out in 1962. And it basically documented, because they were using DDT for killing pesticides, for killing pests, and the indiscriminate use of pesticides basically it interfered with the water cycle. Then it interfered with the biodiversity there. Then the migration of birds were affected. So the environmental effect because of the indiscriminate use of pesticide, that was documented by she was a scientist. And it came out in a form of a book called Silent Spring. And this book, जैसे हम आजकल viral की बात करते हैं ना, so 1960s में this book became very famous, very much spoken about, and finally it actually act as one of the triggers to bring the environmental concerns into forefront. So 1970s climate change, it emerged as a political issue, and there was push that we require coordinated global effort to address the environmental crisis. उस समय तक हम global warming बोल रहे थे, but we're considering more as an environmental crisis.
Then what was done, if you see, I will cover this, some sections I'll cover in detail. So 1972, the first UN conference was done in Stockholm, and this was to address issues of environment. And then United Nations Environment Program was formed as a result. They said we need a UN body to look after these environmental issues. 1979, the first World Climate Conference was organized, and it was jointly sponsored by UNEP and WMO. UNEP is United Nations Environment Program, WMO is World Meteorological Organization, and it led to the establishment of World Climate Program. So there was international coordination, ki data exchange hoga, we'll monitor how the weather is changing, we'll share our databases, and then we'll try to figure out how the climate overall is changing. 1988, it led to the establishment of IPCC. Now, IPCC is important. I'm going to cover IPCC in detail today because as far as the international climate policy is concerned, IPCC is a scientific body that guides UNFCCC, or it guides other processes. Kyoto Protocol के लिए input IPCC की report नहीं दिया. UNFCCC जो हम बाद में भी UNFCCC में आएंगे, but the major international frameworks that have come up, instruments of climate policy that have come up, IPCC has been the scientific guide, and also that scientific advice has given a push for that instrument to come. So IPCC is very important. I'm going to cover it in detail. So 1988 is it was formed. Then 1990, they said, 2 years after IPCC, the UN General Assembly said that we need to have an international convention, some sort of ruling or framework or policy which guides global action on climate change. 1992, Rio Earth Summit took place, and this is where the United Nations Framework Convention on Climate Change, which is generally known as UNFCCC. We don't call it, को non-climate वाला कोई जना इसको पढ़ेगा तो they will say UNFCCC. It is in climate circles, it is termed as or spoken about as UNFCCC. So UNFCCC basically came out in 1992 in the Rio Earth Summit. It was adopted in 1992, and then there are protocols. All the countries have agreed. Then the countries have to go back. Because the international agreement, they have to go back, get it ratified through their own parliamentary processes. So that took about 2 years. It came into force in 1994. So UNFCCC also I'm going to cover in detail today. So IPCC is the first step. Then the second step is your UNFCCC. 1993, 3 साल के बाद the Kyoto Protocol was adopted. And UNFCCC, what happens is, it is a convention, and all the parties, all the countries which are party to this convention, they meet every year. And when they meet every year, it is called the Conference of Parties, जिसको हम बोलते हैं COP or COP. So UNFCCC जब it came into force in 1994, then next year से हमारी COP होनी शुरू हुई. जब वो मिलना शुरू हुए, so every meeting, जैसे अभी हमारे पास ग्लासगो में हुई थी COP26, so COP means Conference of Parties. It means they are meeting under UNFCCC. So then later on, one of the COP3, I think, Kyoto Protocol was adopted. Why Kyoto Protocol was important? Because UNFCCC के जो goals थे, they did not take any quantified goals. Quantified goals मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि temperature इतना कम करेंगे या GHG emission इतना कम करेंगे. It was only 1997 that developed country parties, जितना developed world है, जिन्होंने कि historically हमेशा ज़्यादा greenhouse gas emissions निकाले हैं, they took a commitment, formal commitment, that we cover it later on, कि हम अपने baseline से इतना % emissions को कम करेंगे. So Kyoto Protocol becomes important because of that, because the first time they had an emission reduction treaty. Then now, as you notice the timeline, 97 it was adopted, and it came into force only in 2005. So it took about 5 + 3, 8 years for it to come into force. Many countries withdrew it also. Oh, sorry, kahani. Then 5 years later, we had Copenhagen Agreement. Now, is Copenhagen, basically what they said is that mitigating is not only the developed country responsibility, the developing country parties are, because why China, India, Brazil, they're developing countries, they're also one of the biggest emitters. So they said, jo bade emitters hain, we are agreeing they're developing, but let them make their own commitments. They should also commit to mitigate. Mitigate matlab apni GHG emissions ko kam karo. So negotiations failed, but whatever, Copenhagen Agreement came into place. Then Cancun Agreement is important, COP16 mein, because it led to 2 major things. First thing is the Green Climate Fund. पहले UNFCCC के अंदर एक mechanism था, GEF बोलते हैं, Global Environment Facility, where it provides the developed country parties, they provide financial support to developing country parties. That is a small fund. Cancun Agreement said we need a larger fund, the Green Climate Fund. So that came into force, and another one was CTCN बोलते, Climate Technology Center and Network. So these 2 things came because of the Cancun Agreements. Then by 2011, they said we need, because UNFCCC was adopted in 1994.
2011 is more or less about 18 years, 20 years down the line. They said now our understanding of climate change has improved. Now we have better technologies to combat climate change, so we need a new agreement. So 2011, this work started, and finally, after 4 years, lot of negotiations, by 2015 COP21, the Paris Agreement was it was adopted. And by this time, the climate justice, that political commitment political commitment towards climate justice was so much that within a period of 1 year, 2015 December में Paris Agreement adopt हुआ था, and by December, or I think November ending of 2016, within a period of 1 year, Paris Agreement came into force. So your major milestones are your UNFCCC, then is the Kyoto Protocol, and then comes Paris Agreement. We are going to cover all these three into detail. I am also going to cover IPCC into detail because that is the scientific basis that provides support to all these international instruments. Now, these are the milestones. I have put it in the slide. I'm not going to cover it in the slide so that, all those who want to read it at their own time, they can read it. जो मैंने highlight किया है, that I'm going to cover. Now, this is the timeline. Whatever we've seen in the last time, it is covering most of the events and what was the outcome of these events. So basically what happens is that thrust for global climate action, it started picking up from the 70s, and 1997 में Kyoto Protocol हो गई. 2000 में one important thing took place. UN General Assembly met and they said for next 15 years, we need to chalk out our role. UN अगले 15 साल में क्या करेगा? So they adopted 8 Millennium Development Goals because that was change of from 20th century, we're stepping into 21st century. They said we'll have 8 Millennium Development Goals. MDG, they stand for Millennium Development Goals. But the thing was, at that time, none of the MDGs featured climate change. So that was our understanding in year 2000, that the MDGs did not feature climate change. Then various other steps, read at your own time. They are very detailed. I'm not going to get into it. Then by 2015, what happened is 2000 they had taken MDGs. They said we'll chalk out a program for next 15 years. By 2015, they say now we want to revise our role for next 15 years. So from 2015 to 2030, what do we do? So from 8, they graduate to 17 Sustainable Development Goals. And these are more holistic goals. Why? Because next 15 years, we graduated from health and poverty and maternal health and child education. Now we are thinking more about sustainable consumption. We're thinking about climate change. We're thinking of international cooperation to achieve various goals. So from 8 MDGs, we graduate to 17 SDGs. They are Sustainable Development Goals. And goal 13, it pertains to climate action. 2015, famous COP21 Paris Agreement was, this is the latest agreement we have on climate change. There are various methods by which it is implemented. I will cover it later in detail. Now, were the changes scientifically analyzed? जो भी हमने changes पढ़े थे climate parameters में. So IPCC was formed in 1998. It is an internationally accepted authority on climate change. Why? First thing is, it has got government, it is an intergovernmental panel on climate change. So all countries have got their official representation, government representation. Second thing is, how the IPCC produces its report is that you have scientists from all the countries nominated by country government. So you have government representation and you have representation of the scientific community also. So there is global consensus on the work that is undertaken by IPCC. Then it plays a major role in UNFCCC process. मतलब the international climate policy है कैसे? Through its reports. It basically provides, you'll find prior to every major agreement coming up, उससे पहले IPCC की some report has guided. And for its work, it was recognized with 2007 Nobel Prize, and it was shared with Al Gore. He was also a huge activist. His activism was known, the Inconvenient Truth is the movie that most of you would have seen. They were awarded for contributions to human understanding of climate change. What does IPCC do? See, I'm going to spend some time on IPCC because you're doing some research, you're doing some ESG related work. I don't know, baki cheezon mein. If you're into climate change, if you're into little bit into, whether you're working in policy, whether you're working something else, you're referencing, always go back to because IPCC is like that Mahabharata of the entire research. It does not conduct original research, and IPCC अपनी research नहीं करती है. वो क्या करती है? जो भी peer reviewed research, यानी कि जो भी किसी recognized reputed scientific journal में publish हो गया पेपर, कहीं भी publish हुआ हो, अगर उसको साउथ एशिया की बात करनी है तो it will see all the papers that have been peer reviewed, that have been published in peer reviewed journal. It will pick up all the
journals on adaptation. It will pick up depending on किस पे काम कर रहा है, किस एरिया के ऊपर वो रिपोर्ट बन रही है, उस रीजन के ऊपर अगर रिपोर्ट बनी है तो वो सिर्फ वहां के ऑलरेडी पब्लिश्ड लिटरेचर को असेंबल करता है. Then it undertakes comprehensive assessment of what already published peer-reviewed literature. Then it produces reports on the request from either UNFCCC or चाहे Paris Agreement की पार्टी हो या Kyoto Protocol, if they request the IPCC that we want this specific report, it undertakes that assessment and it designs methodology. Methodology for what? अगर हम कहते हैं हमें ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री एस्टिमेट करनी है तो अलग आप कोई कंट्री का मैं ऐसे एस्टिमेट करूंगा, कोई कंट्री का मैं IPCC has got standard methodologies for every sector कि अगर आपने इस सेक्टर का आपके पास डिपेंडिंग ऑन हाउ ग्रैन्युलर इज योर डेटा, they have methodologies in place to estimate your greenhouse gas inventories. Then ये तो हो गए assessments. IPCC in addition to these reports and methodologies they bring out their assessments. Comprehensive assessment होते हैं. Full assessment report में क्या होगा, जो हम अभी कह रहे हैं ना AR6 आ गया, 6th assessment report. It consists of 3 parts. First thing is there is scientific assessment. So एक physical science basis होगा कि science क्या कह रही है. Second thing is it talks about उसकी implications यानी कि impacts क्या होंगे और potential future risks क्या होंगे. And then it suggests कि साइंस ये कहती है इससे ये इम्पैक्ट होने वाले हैं, फ्यूचर रिस्क ऐसे बढ़ने वाला है, घटने वाला है. What would you do in case you have to adapt or you have to mitigate? So it provides possible options for prevention. Now, if you go into IPCC, I would strongly recommend go and visit the IPCC website. You'll find it's a gold mine as far as it is also a mine where you'll get lost because it has got so much of data. So broadly speaking, how do you approach it? IPCC जो assessment report होगी इसकी 3 reports होती हैं. You have working group 1 report which is the physical science basis, working group 2 report जिसमें होता है impacts, adaptation and vulnerability. It talks about the entire globe and then it comes down. वो globe से start करेगा, then वो region wise बताएगा कहाँ पे impact ज़्यादा है, कहाँ पे vulnerability ज़्यादा है, कहाँ पे adaptation की ज़रूरत है. Working group 3 works on mitigation of climate change. And then उन तीनों के basis में एक synthesis report बनाते हैं which is called summary for policy makers because they are such huge reports. They are basically used for research. अगर आप referencing देखोगे research papers, you will find the referencing of IPCC reports is so huge because it is very scientific in nature. So what they do is जो main उसका culling out है, they make a synthesis report which is called summary for policy makers. Where are we currently? अभी 6th assessment cycle चल रही है and the first working group report has been, जो अभी last time we spoke that climate change की report has been termed as code red for humanity. Which report are we talking about? We are talking about the working group 1 report, यानी जो physical science basis है वो release हुआ है August 2021 में, and जो 2 or 3 की reports हैं I think they are going to come by end of next year. So this is the report that has come up. So if somebody says IPCC report, you have to ask which IPCC report. There somebody will say 5th assessment. Which report of 5th assessment? So you'll say I'm talking about working group 2 or I'm talking about SPM. SPM तो basically synthesis ही होता है और WG3. So this is how you broadly approach IPCC reports. Go to their website, browse their website, it's very rich. Now, was there a 4-hour warning and suggestions on what to do? So this is one chart. I have a lot of data later on, which I'm not going to talk about, but I've kept in the slides for all those who want to read it in detail. So IPCC 1998 it came into existence. FAR is the first assessment report. It came out in 1990. And it guided the process for UNFCCC, which came out in 1992. Second assessment report came out in 1995. It guided the process which led to the formation of Kyoto Protocol. The third assessment report came out in 2001. TAR is third assessment report. Third assessment report की thrust की वजह से adaptation came into mainstream. AR4 came out in 2007. This was the time when they got the Nobel Peace Prize also. That is the time when this talk of 2 degrees Celsius or limiting our global warming to 2 degrees Celsius came. It was guided by AR4. 2013 and 14, AR5 came out and Paris Agreement came out in 2015. So these are the scientific reports which have always guided the, they have provided scientific guidance to any of the international instrument that has come up in relation to climate policy. Now, when 2015 Paris Agreement was adopted, their Conference of Party, COP 15,000 UNFCCC का, so they requested the IPCC कि आप special report निकालिए. So they took out 3-4 special reports. One was SR 1.5. SR 1.5 is special report on impacts of global warming of 1.5. अगर Earth 1.5 warm हो गई तो आपके पास क्या impacts आएंगे? All these reports have come out in
2018. 2015 they requested, 2018 these reports came out. One was SR 1.5, another one was SROCC, special report on climate change, cryosphere, and there's one more C I'm forgetting now. Third one was special report on climate change and land. So this was basically land में desertification, biodiversity loss, water crisis, ये सबको cover करता है SRCCL. So these were 3 reports that came out, special reports that came out by IPCC in 2018. Now currently we are in the AR6 cycle, जिसका भी मैंने बताया working group 1 की report आ गई है. This is going to later on guide the process of global stocktake. अभी समझ में नहीं आएगा global stocktake क्या है. When I talk of Paris Agreement, you'll know what I'm talking about. Global stocktake मतलब Paris Agreement के जो methods and mechanisms हैं जिससे कि हम climate change के action को measure करते हैं. So your AR6 is further going to guide your Paris Agreement की other processes. Now, what are the forewarning? What did these reports talk about? I have covered 1st to 6th. I am not going to cover 1st to 5 because they're very detailed. The thing is, these reports right from 1990 have been telling us that human activity is, the GHG, it is contributing too much to the increase of GHG concentration. And अगर आप business as usual, यानी कि अगर आप कुछ नहीं करोगे, जैसे आप emit कर रहे हो, उसे करते चले जाओगे, then your global mean temperature is going to increase. I will not read from now on. First assessment report ने भी यही कहा, सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट ने भी यही कहा, थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट ने वल्नरेबिलिटी ले आए सामने, अडेप्टेशन ले आए, थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट के बाद अडेप्टेशन आ गया. सो गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई विल बी वेरी रेपिटेटिव. वन, दूसरा कि this will take a lot of time, but I have kept it for record because all those who are interested to read, please go through it. So these reports periodically over a period of 5 years, 6 years, हर 5 या 6 साल में एक IPCC का assessment निकलता है, full assessment. From 1990 onwards, they have been telling with more higher degree of confidence कि हम बहुत ज्यादा emit कर रहे हैं. अगर हम इसी ट्रैक पे चलते रहे, अगर बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा, तो हमारे पास इतना इम्पैक्ट हो जाएगा कि वी विल नॉट बी एबल टू रिकवर. 2007 आ गया, 2007 AR4 आ गई, देन 2005 में AR5 आ गई, 5th असेसमेंट रिपोर्ट आ गई, एंड इट सेज दैट projections suggest that without new mitigation policies, global mean temperature would increase by an average of 3.7 to 4.8 degrees by the end of the century. अगर आप इन्हीं policies जो आपने commit किया है, this is we are talking about just 6 years back. So whatever policies were there 6 years back, it said अगर उन्हीं policies से चलोगे तो end तक तो आप 4.8 degrees, ये आपकी median values हैं. Actually range तो उसकी 2.5 to 7.8. 7.8 degrees catastrophic rise, मतलब बहुत ज्यादा biodiversity का loss हो जाएगा. Now AR6 जो हम अभी current cycle बाद, this I'll cover in detail. AR6 का भी working group का first report has come out and it has been termed Code Red for Humanity by none other than by the UN chief himself. And इसके 5 future impacts हैं, and they're not, मतलब they are very क्या कहना चाहिए, I don't see any hope in it. So the first impact it says is that temperature increased by 1.5 degrees Celsius by 2040 under all emission scenarios. We've already seen what are scenario. आप कितना भी stringently अपने GHG emissions को कम कर लो, या चाहे आप मतलब सबसे जो stringent scenario है वहां से लेकर आप कितने भी leniency में चले जाओ, by 2040 temperature will definitely rise by 1.5 degrees Celsius. Arctic likely to be practically ice free in September, at least once before 2050 in all scenarios assessed. हम प्रोजेक्शंस की बात कर रहे हैं. सेट एक बार तो साल में 2050 से पहले सितंबर में कम से कम एक बार तो ये आर्टिक फुल्ली आइस फ्री हो जाएगा सितंबर के महीने में. इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ सम एक्सट्रीम इवेंट्स अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इवन एट द वार्मिंग ऑफ 1.5. यानी जो हम बोल रहे 2050 तक टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा, तो ऐसे इवेंट्स जो कि अनप्रेसिडेंटेड हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू हो जाएगी. एक्सट्रीम सी लेवल इवेंट्स once a century in recent past, जो कि पहले मतलब अभी recent past तक साल में कभी एक आध बार होते थे, they are projected to occur at least annually at more than half of the observations you have by the end of the century में. जो हमारी पिछली सेंचुरी में साल में कभी एक आध बार कोई एक्सट्रीम इवेंट होता था, एंड ऑफ द सेंचुरी तक वो इवेंट्स एनुअल बेसिस पे होने शुरू हो जाएंगे. कहाँ पे? कम से कम हाफ ऑफ द लोकेशंस. एंड लाइकली इंक्रीज इन फायर वेदर इन मेनी वेज. ये तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं. Wildfires, jungle fires, and there's so much loss of jungle forest as well as biodiversity. Now what was done at international level? इतना कुछ IPCC इतने सालों से बताता जा रहा है. What was done at international level? We have seen this figure earlier also. There are a lot of negotiations. What you see, some meetings, some outcomes have come, some meetings, some outcomes have not come. In some meetings, some outcomes or instruments have come. We are going to IPCC, we've already discussed. I will cover briefly UNFCCC, Kyoto Protocol, and then Paris Agreement.
what is UNFCCC? Now, यहाँ से हमारी climate policy शुरू हो जाती है. तो UNFCCC is the United Nations Framework Convention on Climate Change. What is its goal? Its goal is to prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Dangerous anthropogenic मतलब anthropogenic हमने पढ़ रखा है human induced interference जो कि dangerously interfere कर ले climate system से, वो इसका goal था. Now remember that this was formulated in 1992. By that time we did not know कि हमारे figures क्या हैं. We did not know कि ये हमारे इतने फीडबैक मैकेनिज्म से एक्चुअली कैसे मैनिफेस्ट होगा. तो ये बड़ा ब्रॉड गोल है, इसमें कोई टाइट गोल नहीं है. Another thing is there is no legally binding limit on the greenhouse gas emissions of country party. Country party मतलब all the countries which are part of this convention, जिन्होंने साइन कर रखा है इस agreement को. There is no legally binding limit. And it is based on what principle? It is based on the principle of CBDR and RC. ये word बहुत commonly use होता है climate policy circles में. Try to understand what it is. I'll explain every term. Common but differentiated responsibility and respective capability. Common मतलब common responsibility, यहाँ से शुरू होंगे. Common responsibility कैसे? Because climate change is a global problem. Everybody is getting affected. Many of them have contributed, but everybody is getting affected. So it is a common global problem. But differentiated also. Differentiated कैसे है? Because till from the time the industrial revolution has started to now, if we see, जो अभी developing countries जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, we have started developing recently. We have started adding to the carbon budget, or we have started emitting GHG emissions only recently. पिछले 100 साल से तो developed country emit कर रही थी. तो basically historical responsibility किसकी है? Developed world की ज्यादा है. That is why though it is common, but still it is differentiated. किसी की responsibility ज्यादा है और किसी की responsibility कम है. So this is common but differentiated responsibility, यानी CBDR. And respective capability. What is respective capability? If I compare India or if I compare Indonesia with USA, now compare in terms of GDP, compare in terms of resources, compare in terms of technology, what is the capability of USA and what is the capability of India? So you find that the developed countries have a higher capability in terms of finance, in terms of technology, in terms of resources, if you compare it with smaller countries which are not as developed. So developing और developed की capability में फर्क है. इसी की basis में इसने क्या कहा कि जो इसके बाद में और instruments निकल के आए वो सारे इस principle है. They say इसका CBDR and RC का basic, अगर इसको मुझे simple words में बताना होगा तो इसका कहने का मतलब है कि developed world ने ज्यादा emit किया है, उनकी ज्यादा responsibility है. Developing countries के पास अभी उतने resources है नहीं, वो अभी develop करना शुरू किया तो उनकी capability कम है. So the developed parties have to help the developing parties or developing countries in terms of finance, in terms of technology, and also in terms of capacity building. ये इसका baseline है. जिन्होंने ज़्यादा emit किया है, जो ज़्यादा resources रखते हैं, उनके पास उनकी responsibility भी ज़्यादा है, और क्योंकि उनके पास resources and everything ज़्यादा है, so they need to help the developing country parties. This is the common principle. And yes, बाकी जितने भी हमारे international govern करते हैं सब CBDR and RC के ऊपर based है. How does it work? तो framework convention क्या है? Go onto the internet and try to read. It's not a very big convention, पर इसकी language बड़ी technical है, समझने में time लगेगा. But the thing is, एक main convention, जैसे आपने papers देखे होंगे, all those who worked with any sort of documentation, so there's a document, then with that you have some annexures and you have some appendices and सब कुछ होता है. तो UNFCCC में क्या है, एक Annex 1 है. Annex 1 is like Annexure 1. Annexure 1 has got around 37 countries, which are basically all the developed countries and economies in transition. Economies in transition मतलब रशिया और जो उस समय ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी वो डेवलप तो कर गई थी, तो उनको डेवलपिंग नहीं कह सकते थे. दे वर स्टिल ऑन द वर्ज ऑफ being included into developed countries. तो वो 37 countries का ग्रुप है which is listed in Annex 1. So इसको हम developed country party कहने की जगह technical language में UNFCCC में बोलते हैं Annex 1 parties. Technical language में we call them Annex 1 parties. Non-Annex 1 parties कौन सी होती हैं? All those which are not listed in Annex 1. Non-Annex 1 parties listed नहीं कहीं, जिसका नाम Annex 1 में नहीं है वो non-Annex 1 party है. So Annex 1 is basically developed country party. Non-Annex 1 are basically developing parties. So what it does is it puts the onus on developed countries to lead the way. Second, what it does is UNFCCC के अंदर एक provision है where it says that you need to direct fund for climate change activity. कौन करेगा? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एक एस्टैब्लिश करा उन्होंने इंस्टीट्यूशन, जहां पे कि डेवलप्ड कंट्री से फंडिंग आएगी एंड फॉर वेरियस थिंग्स थ्रू जेफ
इसको जेफ बोलते हैं, इट विल फ्लो टू डेवलपिंग कंट्री पार्टीज। जिस भी चीजों के लिए उसको आप यूटिलाइज करना हो, प्रपोजल जाता है, जेफ में अप्रूव होता है, प्रोजेक्ट्स, नेशनल प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं, एंड फंड फ्लो इज फ्रॉम जेफ, फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू जेफ एंड फ्रॉम जेफ टू डेवलपिंग कंट्री पार्टी। थर्ड थिंग इज इट आस्क्स फॉर रिपोर्टिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन। हमने कहा तुम्हें मिटिगेशन करना है, तुमने अडेप्ट, पर तुमने किया क्या? So what it does is it asks for reporting. Every country has to submit their communications. तो जो Annex 1 पार्टी है, बाद में क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल आ गई उनके लिए, तो वो क्योटो प्रोटोकॉल के मैकेनिज्म के हिसाब से दे रिपोर्ट टू UNFCCC कि उन्होंने क्या किया मिटिगेशन में, और कितने टारगेट्स कम करे, क्या क्या उनके क्वांटिफाइड टारगेट्स बोलते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं। नॉन Annex 1 यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री पार्टी है, वो दो तरह से रिपोर्ट करती है। वन इज द नेशनल कम्युनिकेशन, विच इज द एक्रोनिम इज नेटकॉम, नेशनल कम्युनिकेशन, या जो कि 5 या 6 साल में एक बार जाता है। और दूसरा अब उन्होंने नया प्रोविजन ले आए हैं बाइनल अपडेट रिपोर्ट का, यानी कि 2 साल में, बाइनल मींस वंस इन 2 years, सो वंस एवरी 2 years दे रिपोर्ट व्हाट हैव दे डन इन क्लाइमेट चेंज। सो नेटकॉम तो बहुत डिटेल, बढ़िया रिपोर्ट होता है, बहुत बड़ा रिपोर्ट होता है, मिटिगेशन एक्शंस, अडेप्टेशन, आपकी टेक्नोलॉजी नीड असेसमेंट क्या है, एवरीथिंग अंडर द सन यू रिपोर्ट इन नेटकॉम। BOR में व्हाट यू यूजुअली डू इज कि आप अपनी ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी का अपडेट दे देते हो, ये हमारी लेटेस्ट। सो what is the reporting on climate action? You do it either through NATCOM or through BOR, and then it had formally considered adaptation to climate, क्योंकि पहले सब कह रहे थे कि ग्रीन हाउस गैस को कम करो, ग्रीन हाउस गैस को कम करो, यानी कि मिटिगेट करो, बट देन दे एक्सेप्टेड कि कम करने से भी ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी आप एमिट कर चुके हो उसके इम्पैक्ट्स तो आएंगे, सो यू नीड टू अडेप्ट ऑल्सो, सो इट मेन स्ट्रीम अडेप्टेशन। नेक्स्ट वॉज क्योटो प्रोटोकॉल। UNFCCC के नीचे, मतलब अगर आप हायरार्की ट्री देखेंगे तो UNFCCC इज द अम्ब्रेला कन्वेंशन, उसके नीचे आती है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिक्रीज द लेवल ऑफ GHG एमिशंस विद कमिटमेंट्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री पार्टी। ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्री पार्टी को बोलता है कि आपने अपने एमिशंस को कम करना है। प्रिंसिपल क्या है? इट रिमेन्स द सेम, दैट इज व्हाई इट हैज बीन असाइन्ड टू डेवलप्ड कंट्री पार्टी। UNFCCC में कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं था, क्योटो प्रोटोकॉल में एक बाइंडिंग टारगेट है ऑन GHG एमिशंस फ्रॉम डेवलप्ड स्टेट। व्हाट इज द बाइंडिंग टारगेट? क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड वाज 2008 to 2012, एंड दे सेड कि हम 1990 में हमारे जो भी एमिशन लेवल थे, जो भी रिस्पेक्टिव पार्टीज हैं, उनसे विल रिड्यूस बाय 5%। सो 1990 का जो भी लेवल था उससे 5% कम कर देंगे। दिस वाज द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड। कैसे काम करता है क्योटो प्रोटोकॉल? तो इनके पास, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, बट just understand that these terminologies, they exist within your climate change debate. अब क्या है कि suppose I give you an example that Germany, within European Union, Germany has to cut down its emission. कैसे cut down करेगा? मतलब whatever is its current rate, उसको 1990 के लेवल से भी 5% नीचे जाना है। तो उसमें क्या, 2-3 उन्होंने मार्केट मैकेनिज्म निकाल दिए। तो जब हम later on when we talk about carbon markets, so ये जो market mechanism निकाले, it is carbon market came into existence only after Kyoto Protocol. They say we will do carbon trading. How will you do? Suppose the cost of reducing their emissions in Germany is very high because उनका कोई एक प्रोसेस को कम करना पड़ेगा कुछ, तो उन्होंने कहा एक ऐसा प्रोविजन निकालते हैं। सपोज मैंने इंडिया में कहीं पे एक एफोरेस्टेशन का प्रोजेक्ट लगा दिया, और वहां पे इतने पेड़ उग गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो भी डिसाइडेड ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का, इतने पेड़ उग गए, उस पेड़ की वजह से, क्योंकि वो तो कार्बन सिक्वेस्टर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, तो वहां पे इफेक्टिवली इतनी ग्रीन हाउस गैस कम हो गई। तो वो बोलेंगे हम ऐसे, एंड रनिंग दैट प्रोजेक्ट इन इंडिया इज कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू रनिंग दैट प्रोजेक्ट इन जर्मनी, बिकॉज जर्मनी में उतना लैंड नहीं है, मतलब फॉर वट एवर रीजन। सो दे फाइंड दैट इफ दे फंड प्रोजेक्ट्स वेयर दे कैन reduce emissions in developing countries, they can trade it. So it is called international emission trade. ये सब कार्बन मैकेनिज्म के बेसिक्स है, कार्बन मार्केट का बेसिक है। देन दे हैव क्लीन डेवलपमेंट में, क्लीन डेवलपमेंट में भी ऐसे है कि जो डेवलपिंग कंट्री पार्टी, डेवलप्ड पार्टी होगी, वो एक प्रोजेक्ट फंड कर देगी डेवलपिंग कंट्री पार्टी में, उसका उनको देखना पड़ेगा कि न्यू और एडिशनल फैक्टर क्या है, एंड देन दे टॉक इन टर्म्स ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। Another thing is that you are not fully funding one project, you are jointly implementing a project. A part of the project is in your country, a part of the project is in another country, and jointly you are implementing. This is to put it very simplistically, but the carbon market came up with Kyoto Protocol. They said अब अगर हमने कम करने हैं emissions, अब दुनिया में तो तुम कहीं भी कम emissions करो, because वो पूरा connected है आपस में, so that can also work. So the global carbon market came into existence after Kyoto Protocol. सेकेंड कमिटमेंट पीरियड क्या था? 2012 तक फर्स्ट कमिटमेंट था, सेकेंड कमिटमेंट पीरियड आया 2013 से 2020 तक, और दोहा अग्रीमेंट था 2012 का तब हुआ। लेकिन इसमें टारगेट क्या था?
फर्स्ट दे अग्रीड फर्स्ट फेज में दैट विल रिड्यूस बाय 5%, सेकेंड में दे से विल रिड्यूस बाय 18% बिलो 1990 लेवल्स। लेकिन ये अग्री तो हुआ था 2000, अडॉप्ट तो हुआ था 2012 में, इट केम इनटू फोर्स ओनली बाय December 2020 बिकॉज for a agreement to come into force or for a protocol to come into force, that is to be first ratified by the country party. जैसे suppose 196 197 countries हैं globally, उन्होंने साइन किया, या क्योटो प्रोटोकॉल तो कम नहीं किया बिकॉज इट इज ओनली डेवलप्ड कंट्री, तो क्या होगा, सबने अपनी कंट्री में रेटिफाई करके वापस जमा करना है ना, दैट प्रोसेस गॉट डिलेड बिकॉज इसमें सारा जियोपॉलिटिक्स plays a game in this. So it was only by October 2020 that the minimum instruments they wanted was 144, वो October 2020 में हुआ, and they have a procedure कि जब receive होगा 90 days के बाद it come into force. So what was agreed in 2012 basically came into force in 2020. Now this I have to add, दो SDGs directly नहीं है, but 2000 में 1997 में ये हो गया, 2000 में your 2015 में your sustainable development goal came into existence, जो revision किया, 17 goals हैं, 13th goal that it deals with climate action, and what does it say? Its goal is to take urgent action to combat climate change and its impacts. And इसमें क्या होता है, हर गोल के अंदर you will again have to revisit you will have to visit your SDG की वेबसाइट्स, UN की डेडिकेटेड वेबसाइट है, हर गोल के नीचे कुछ टारगेट्स होते हैं, हर टारगेट्स के नीचे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, दे मॉनिटर कि ये इंडिकेटर में अगर मुझे ये टारगेट को ट्रैक करना है तो इसके नीचे 4 इंडिकेटर्स हैं विच आर ऑल क्वांटिफाइड, तो उसको आप कैसे क्वांटिफाई करोगे, एंड देन दे सी कि SDGs की प्रोग्रेस क्या हो रही है. So this SDGs were adopted, I think September 2015 में वो हुए थे, and November 2000 extend हो गई थी, December 2015 में your Paris Agreement came into force. Now what does Paris Agreement say? Its goal is you limit the global warming to well below 2 degrees Celsius when by the end of the century, preferably to 1.5 degrees compared to pre-industrial level. Pre-industrial level कौन से हैं? 1850 to 1900 का हम जो एवरेज निकालते हैं, those are considered a pre-industrial level. So they are telling कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हमारे को जो उस समय GHG की वजह से टेम्परेचर्स थे, उससे हमें कम से कम लिमिट करनी पड़ेगी. राइज 1.5 डिग्री से, मतलब 2 डिग्री से कम होना चाहिए, प्रेफरेबली 1.5, मतलब और स्ट्रिंजेंट अगर आप एक्शंस लोगे तो वो 1.5 डिग्री पे अरेस्ट हो जाएगा. हाउ डज इट वर्क? इसके 4-5 मैकेनिज्म होते हैं. फर्स्ट थिंग इज नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, टारगेट अग्री हो गया, आपने आपका जो भी 1990 का लेवल था, यू हैव टू गो 5% बिलो दैट. तो हर कंट्री का अपना लेवल होगा, वो अपने लेवल के हिसाब से जो उसका 1990 का लेवल था उससे 5% कम चला गया, और अभी जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड है वो 18% बिलो चले जाएंगे. What Paris Agreement unique about Paris Agreement is it says nationally determined contribution. Every country or every nation will determine themselves how they want to contribute. So कोई टारगेट टॉप डाउन नहीं आता है, मतलब पेरिस अग्रीमेंट ने किसी कंट्री को कोई टारगेट नहीं किया. पेरिस अग्रीमेंट ने एवरी कंट्री, इट टोल्ड एवरी कंट्री और रिक्वेस्टेड, द टर्म दैट दे यूज इज रिक्वेस्ट, दे रिक्वेस्टेड एवरी कंट्री पार्टी that you tell us voluntarily, you determine yourself what do you want to contribute. You want to contribute in terms of adaptation, in terms of mitigation, in terms of whatever, whichever way you, आप अपने targets खुद decide करिए और आप हमें बता दीजिए what have you determined for yourself. तो जब ये पेरिस अग्रीमेंट अडॉप्ट होने से पहले, पेरिस अग्रीमेंट दिसंबर में आया, अक्टूबर में इन्होंने पहले INDCs मांगे थे, इसके आगे एक आई भी लगा होता था विच वॉज इंटेंडेड, बिकॉज NDC तो दिसंबर में फाइनलाइज हुआ, उसके पहले पेरिस अग्रीमेंट तो दिसंबर में फाइनलाइज हुआ 2015 में, उसके पहले उन्होंने बोला इंटेंडेड. अब इंटेंड जस्ट गिव अस एन आइडिया एंड लेटर ऑन देन इट बिकेम बाइंडिंग. So the first thing is every country decides for itself ki what are they going to be the targets. Second, they ask countries to submit their long-term strategies. What long-term strategies? Long-term strategies up to 2050 for low carbon development. आपने जो NDC commit कर रहे हैं उसको लेके, या फिर आपका जो भी low carbon pathway है उसके लिए what strategies are you going to implement? Tell us your plan. So second ये. Third is global stock takes. Global stock take मतलब आपने ये commitment किया, आपने ये तरीका बताया, पर आपने किया कितना. तो global stock take is every 5 years they say we will take a stock of how much have you actually reduced, whatever you committed, and have you what action have you taken on this. So ये इसके 3 methods हैं. इसके अलावा it has mechanisms for finance, it has mechanisms for technology, it has mechanisms for capacity building. You will have to read it. It's a very detailed agreement, but the mechanisms exist for these 3 things also. Now I will first cover NDC. Now this is one image that shows कि हर country ने कितना कितना NDC में क्या क्या बताया. So the number of parties that have submitted NDCs are, इसके ऊपर से देखना पड़ेगा कहाँ चला गया है, 197 में से 191 have submitted their NDCs. Then 141 have
क्वांटिफाइड रिन्यूएबल पावर टारगेट्स इन द एनडीसी। मतलब उन्होंने एनडीसी में बोला हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन 141 पार्टीज ने अपने क्वांटिफाइड, व्हाई रिन्यूएबल, बिकॉज रिन्यूएबल इज अगर आप फॉसिल फ्यूल से चेंज ओवर कर रहे हो रिन्यूएबल में, तो आपके जीएचजी एमिशंस, इट हैज गॉट अ डायरेक्ट रिलेशन टू योर जीएचजी एमिशंस और मिटिगेशंस। एंड 63 parties have quantified renewable energy target for direct heat and transport. Why are we considering direct heat and transport? Because हमने, if you recall the first session that we have, you know, in heat and energy मिलके आपका major share of GHG emissions बनाते हैं। तो 63 parties have both renewable energy for heat, they have energy targets for both heat and transport. कुछ countries ने कहा है कि हम इतना शेयर, जैसे इंडिया का अगर आप later on हम देखेंगे कि इंडिया ने बोला है हमारा 40% शेयर विल बी थ्रू रिन्यूएबल्स, पर उसमें ब्रेकडाउन क्या होगा, एनर्जी का कितना होगा, ट्रांसपोर्ट का कितना, वो ब्रेकडाउन नहीं दे रखा। सो दिस इज द ब्रेकडाउन। सो रफली अबाउट 74% of the world has, of the parties which have submitted, they have submitted their quantified renewable power targets. Quantified मतलब फिगर्स दिए, नंबर्स दिए, हम इतना परसेंट कम करेंगे, इतना शेयर रिन्यूएबल से होगा। नाउ इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब हम एनडीसी की बात कर रहे थे, ग्लोबल स्टॉकटेक की बात कर रहे थे, तो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड, 2016 में इट केम इनटू फोर्स, 2018 में इनकी रूल बुक बन गई। रूल बुक मतलब दे सेड हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, बट हाउ विल वी डू, बिकॉज एवरीथिंग इज गॉट अ मेथोडोलॉजी। अगर आपने 197 कंट्रीज से कोई चीज मांगनी है तो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होनी चाहिए अलग अलग चीजों के लिए। ट्रांसपेरेंसी का अलग फॉर्मेट, रिपोर्टिंग का अलग फॉर्मेट, स्टॉकटेक का अलग फॉर्मेट। सो इनकी जो रूल बुक बनी थी दैट वाज अडॉप्टेड इन 2018। Now 2019 में अनदर सबमिट हुआ, 2020 में इन्होंने कहा है दैट यू विल कम्युनिकेट न्यू और अपडेटेड एनडीसी। फर्स्ट एनडीसी कब सबमिट हुआ था, 2015 में। सो every 5 years you update your NDC. It is called ratcheting up of ambition. All those who are working in climate policy would understand this term. Otherwise ratchet up का क्या मतलब होता है, जैसे सपोज आप नट को टाइट कर रहे हो, तो क्या करोगे, आप नट को थोड़ा और टाइट कर दो, फिर थोड़ा और टाइट कर दो, तो आप क्या करते हो, उसमें प्रेशर बनाते हो, दैट इज कॉल्ड रैचेटिंग अप। तो पेरिस एग्रीमेंट सेज कि तुमने 2015 में जो कमिटमेंट किया था एनडीसी की टर्म्स में, नाउ एनहांस योर एम्बिशन, इट इज कॉल्ड एनहांस्ड एम्बिशन, थोड़ा रैचेट अप योर टारगेट एवरी 5 years। तो 15 में हुआ था, अब 20 में होगा। आप एवरी 5 years यू अब कम्युनिकेट योर न्यू एनडीसी एंड ट्राई टू एनहांस योर एम्बिशन। जैसा हमने पिछली बार कहा था, मोदी जी ने तो खैर पहले अनाउंस कर दिया कि हम बहुत ज्यादा कर लेंगे आरई में, बट दे से एवरी 5 years एनहांस योर एम्बिशन। नाउ जो फर्स्ट स्टॉक टेक होगा, वी स्पोक ना कि एनडीसी होगा, फिर उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी होगी और फिर एक ग्लोबल स्टॉक टेक होगा। सो द फर्स्ट स्टॉक टेक इज इन 2023 एंड स्टॉक टेक इज ऑल्सो डन एवरी 5 years। सो आपने 2023 में किया, फिर आप 2028 में करेंगे। आपने 2015 में एनडीसी किया तो 2020 में रिन्यू करेंगे, फिर 2025 में दूसरे एनडीसी, फिर 2030 में दूसरे एनडीसी। और पाथ कहाँ जाना चाहिए, पाथ मतलब एम्बिशियस ये है, एम्बिशन ये है दैट बाय 2030 योर एमिशन शुड बिकम नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब क्या है, हमारे पास चाहे शेयर ऑफ टेक्नोलॉजी से, चाहे हमारे अपनी प्रैक्टिसेस से, चाहे हमारी पॉलिसी से, जैसे हम इफ यू रिमेंबर आई मेंशन अ टर्म कि देयर इज अ स्टॉक एंड देयर इज अ फ्लो और एक सिंक होता है। मतलब अगर हमारे एटमॉस्फेयर में इतने जीएचजी एमिशंस हैं, हर साल हम इतने एमिशंस डाल रहे हैं उसके अंदर, अगर हमें नेट जीरो करना है तो हमें क्या करना है, बाय ईदर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और बाय यूज ऑफ सम मिटिगेशन मेथड और बाय यूज ऑफ सम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, जितने हम डाल रहे हैं उतने ही एमिशंस अगर हम हटा दें उसमें से, कैसे हटा दें, सीक्वेस्टर कर लें, चाहे वो किसी, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक इन इटसेल्फ कि सीक्वेस्ट्रेशन के क्या तरीके होते हैं, चाहे आप फॉरेस्ट बढ़ा के अपने एमिशंस कम कर दो, या आपके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में चेंज आ जाए, या आप रिन्यूएबल एनर्जी में आपके फॉसिल फ्यूल का कम हो गया, या आपने कुछ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं, जितना आपका इनफ्लो होगा उतना ही अगर आप सिंक में निकाल दे तो क्या होगा, जितने जीएचजी एमिशंस हैं वो नेट जीरो बने रहेंगे, मतलब स्टॉक उतना का उतना रहेगा। सो द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ पेरिस अग्रीमेंट इज बाय 2050 योर नेट एमिशन शुड बिकम जीरो। इनफैक्ट नेट जीरो, जब हम कार्बन बजट की बात करेंगे, और हम थर्ड, आज हमारा थर्ड है ना, फिफ्थ वाले में विल टॉक अबाउट नेट जीरो ऑल्सो। सो पेरिस अग्रीमेंट किस बारे में बात करता है, हाउ डू यू ट्रैक प्रोग्रेस, सो इट हैज एन एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क व्हिच फीड्स इनटू द ग्लोबल, ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ लो, बिकॉज ये फ्रेमवर्क अपने आप में बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। ट्रांसपेरेंसी मतलब चीजों को ट्रांसपेरेंट रखो। कैसे करोगे ट्रांसपेरेंट, कि आप जो भी एक्शन कर रहे हो उस एक्शन को बताओ। इन केस समबडी वांट्स टू चेक, इंडिया ने बोला मैंने इतना 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 कम कर, दे सेड ओके शो अस द प्रोसेसेस बाय व्हिच यू हैव डन इट, सो इंडिया शुड बी ओपन टू शो दोस प्रोसेसेस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, ब्रॉडली अंडरस्टैंडिंग। तो दे हैव अ एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, ईटीएफ बोलते हैं। और उससे क्या होगा, क्योंकि जब आप ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट करोगे तभी तो आप स्टॉक टेक कर पाओगे, अदरवाइज हाउ विल यू कम टू नो कि भाई किसने कितना एक्शन किया। एंड सो फार व्हाट इज द प्रोग्रेस दैट हैज बीन मेड,
more and more countries, regions, cities and companies are establishing carbon neutrality targets. जैसे if you remember, Modi ji has recently announced that India would go carbon neutral by 2070. So कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट्स अनाउंस करने शुरू कर दिए लोगों ने कि वी विल गो कार्बन न्यूट्रल, आवर कंट्री विल गो कार्बन न्यूट्रल बाय दिस. नाउ व्हाट इज द स्ट्रेटजी, दैट इज बिसाइड्स, दैट इज अ सेपरेट, it's a whole topic in itself, but this is the progress so far as far as Paris Agreement is concerned. So before I go on to kitna time ho gaya, okay, so this is more or less what you should understand as far as international climate policy is concerned. What is UNFCCC? History हो गई, कैसे कैसे डिबेट बढ़ी, कैसे कैसे नेगोशिएशन बढ़ी. सबसे पहले अम्ब्रेला कन्वेंशन आया UNFCCC. उसने कहा चलो हमें सब कुछ कर, हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन ना हो. देन उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आई, उन्होंने कहा कि नहीं अभी कह तो दिया डेंजरस, कुछ बताओ तो कुछ नंबर. तो क्योटो प्रोटोकॉल सेड ओके, डेवलप्ड कंट्री पार्टीज 1990 से 5% कम, ब्लैंकेट 5% कम, जो भी तुम्हारा एवरेज एमिशन था उससे 5% कम कर दो. सेकंड कमिटमेंट पीरियड में 18% कम कर देना. वो बात अलग है कि वो डिले हो गया. देन दे सेड कि यार, उन्होंने फिर लड़ाई हुई थोड़ी, नामा भी आए बाद में, नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शंस बोलते हैं. जैसे डेवलपिंग कंट्री पार्टी को भी कुछ कमिट करना पड़ेगा. तो वो सब डिबेट चलती रही. फाइनली पेरिस एग्रीमेंट जब आया, पेरिस एग्रीमेंट ने बोला हम किसी को कोई टारगेट नहीं दे रहे, यू डिसाइड योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू. Every 5 years try to enhance your ambition, try to do more, try to do more, try to do more. You provide us a strategy कैसे करोगे, और every 5 years we will check कि तुमने कितना किया. So this is the international. Now the thing is, when you have an international policy which is agreed by our own country, then the country has to take certain steps to implement that international policy in their own country. So वहां से हमारी national policy और सब national plans आने शुरू हो जाते हैं. So ये broad है तीन. UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल हमारे लिए applicable नहीं because we are a developing country party. हमारे लिए important है UNFCCC and Paris Agreement. Now from Paris Agreement and also from UNFCCC, how India progressed, what actions did India take, under which international agreement India was obliged to do all those things, this will cover in the next session. Okay, so the first few buzzwords they say, which is basically I want to use the word climate change vocabulary. The few words we've used, they are very frequently used in your climate policy literature or whatever you say. मतलब parlance में बहुत ज़्यादा use होता है. AR we've seen assessment report, biennial update report, business as usual is a scenario. BAU सब बोलेंगे, BAU, COP बोलेंगे. COP क्या है? जब UNFCCC agreement के नीचे parties मिलती हैं तो उसको बोलता है conference of parties या COP. अच्छा, इसी की जगह पे CMA आ जाता है. अगर वो CMP आ जाता है. अगर क्योटो प्रोटोकॉल में मिलेंगी तो कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग अंडर द प्रोटोकॉल, CMP. अगर पेरिस एग्रीमेंट बनेगी, अग्रीमेंट के नीचे मिलेंगी पार्टीज, तो उसको CMA बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग्स ऑफ पार्टीज अंडर द अग्रीमेंट. तो अगर एक कॉप की जगह पे कहीं पे आपको CMP दिखाई देगा, कहीं पे CMA दिखाई देगा. CMP यानी कि प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टीज मिल रही हैं. CMA मतलब अग्रीमेंट, यानी पेरिस एग्रीमेंट के नीचे पार्टीज मिल रही हैं. CBDR and CFC, CDM is a mechanism for carbon trading under Kyoto Protocol. JEF is the facility from where the funds flow to developing country parties. IPCC we've seen, joint implementation is again a mechanism under Kyoto Protocol. NAMA is nationally, जो हमने पढ़ा था ना अभी कि Copenhagen Accords fail कर गए थे because China and US withdraw करके, उन्होंने कहा developing country parties they need to take mitigation action. NATCOM, NDC. So these are the terminologies we've come up. Go through it. They will be used very frequently. Now, if you have any questions or doubt. Very good session today, Abha. Thank you. You've understood something or not? Understood तो है ही है, थोड़ा वैसा तो अब ठीक 100% तो नहीं होता, लेकिन आपने हाँ. बड़ा अच्छा आज किया उसको, और इतनी 36 आपने स्लाइड जो हैं वो अपने टाइम पे पूरी कर दी. 2 मिनट भी बचे हुए हैं, तो went very well. Hello, Abha. Yeah, thank you so much for today's session. It was so amazing, like Anup sir said. I do have one doubt. The term that you mentioned, the common but differentiated responsibilities and respective capabilities, is there something guiding that, or is that also left up to the countries on determining their own respective capabilities and differentiated responsibilities? So just want to... CBDR and RC is a concept. It is not something that it is not a scale. You have to understand. It is not a scale. It is not a quantified scale. It is a concept. And this concept was formalized and included in UNFCCC.
They said common, Okay. but मतलब it said कि इसका डिबेट कहाँ से शुरू होता है कि डेवलप्ड कंट्री पार्टीज ने बहुत ज्यादा पहले से एमिट कर रखे, दे आर द मेन पोल्यूटर्स। मतलब जब हमने, जब डेवलपिंग कंट्री ने जब ज्वाइन किया, दे सेड वी आर लेट जॉइनर्स टू द पार्टी। हम जब तक आए थे तब तो ऑलरेडी आपने अपना शेयर ऑफ द कार्बन बजट तो आपने यूटिलाइज कर लिया। कार्बन बजट हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या होता है। कार्बन बजट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, बट दे से यू हैव ऑलरेडी ईटन अप मोर देन योर शेयर। क्योंकि जब आप कार्बन बजट कैलकुलेट करते हो तो यू डोंट से कि इंडिया हैज एमिटेड दिस मच, we say how many people reside in India. See, if a poor Indian staying in a rural village without electricity, and he is, let us not say homeless, he is not a landowner, can you compare that person with a high income group individual who stays in USA? You cannot. So Never. you cannot compare it. तो you say कि अगर आप कहोगे कि पर if you say कि मतलब इंडिया ने इतना एमिट कर दिया, डोंट टॉक इन टर्म्स ऑफ व्हाट इंडिया हैज एमिटेड, लुक टॉक इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी पीपल रिसाइड इन इंडिया. India is, in terms of area, if you see, we house so many people, so you talk in terms of per capita emissions. और जब हम per capita इंडिया के emissions को अगर आप number of people residing in India से divide कर दोगे तो इंडिया global average से बहुत नीचे चला जाता है. US, तो so then they say कि then you talk of, so it is a concept. So he said एक तो तुमने pollute ज्यादा किया, your per capita, even now your per capita emissions are so high. So you are, so it is a different, that is why it is a differentiated responsibility. A poor Indian residing in, जो जिसके पास electricity भी नहीं है, he is not that responsible for GHG emission जितना कि एक advanced US citizen who's using 13 times the electricity, जो ये कहते हैं कि जितना उनका एक citizen का, US citizen का जितना एक दिन का consumption है, उतना some poor African staying in the subcontinent उसका पूरा साल भर का consumption उतना नहीं होता, क्योंकि उसके पास तो उतनी electricity है नहीं, साल में 2 घंटे, दिन में 2 घंटे के लिए electricity आती. So you cannot compare. So they said responsibility common है, we agree in principle, every global citizen is responsible, but it is differentiated also in terms of contribution that that person has made. So that is how the concept of CBDR and RC comes. CBDRC का कोई scale नहीं है कि हम calculate करते हैं. That is why India को इसीलिए अभी with Modi the image has changed quite a bit because he has made very ambitious commitments internationally. Otherwise इससे पहले till the time we had UPA government, India never admitted to a mitigation target because you see हमारा तो अभी we have so many people who are living under abject poverty in India कि हमारा main goal is to pull them up. Poverty elevation is our goal. आप कह रहे हो GHG emissions सब कुछ है. So I'll be deviating from it, but the thing is CBDR and RC is not a scale, it is a concept. Okay, I got it, Abha. Thank you. Okay. Excuse me, ma'am. Thank you for the wonderful session, ma'am. I had a quick question. So, like we talked about Jeff and the Cancun agreement that money has to be allocated. So, is this the fund that allocates like the $100 billion promise that the developed countries has made? That is the Green I'm a Climate little Fund. bit. No, that is the Green Climate Fund. Cancun Okay. में जो Green Climate Fund आया ना, so what they did is starting with Obama, everybody made $100 billion commitment करेंगे. उसमें तो less than कितना, I think $2 billion भी नहीं आए. But what has actually flowed into that fund is less than 10% was what was committed. So Jeff अलग है. Jeff is under UNFCCC. मतलब जो 1992 में अग्री होके जो आया है कन्वेंशन, उसने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया था ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी. इनफैक्ट मेनी प्रोजेक्ट्स जो हमारा इवन डेवलपिंग कंट्रीज में जो नेटकॉम होता है, ये जो BOR होता है, ये सब जेफ की फंडिंग से होता है. वी डोंट, हमारी कंट्री गवर्नमेंट देती है, थोड़ा स्पेंड करती है, बट मेजर फंडिंग कम्स फ्रॉम जेफ. But the Green Climate Fund came out from the Cancun agreements. So there were huge commitments that were made, but those commitments were not met. And what they, should not get into it. I will again deviate from it. The thing is, जो वो aid देते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री पार्टी देती है एड, वो क्या करते हैं ना, डबल काउंटिंग आती है. दे सेड उन्होंने किसी प्रोजेक्ट ले दिया, दे सेड दिस प्रोजेक्ट, दिस मनी वी हैव गिवन फॉर दिस प्रोजेक्ट, इट शुड बी काउंटेड टुवर्ड्स द ग्रीन क्लाइमेट फंड. GCF में काउंट होना चाहिए. लेकिन वो उसमें एक फैक्टर आता है न्यू एंड एडिशनल. आप नया क्या दे रहे हो और एडिशनल क्या दे रहे हो. सो वो क्लाइमेट फाइनेंस में ये इट इज अगेन covered more intensely under climate finance, but JEF is a separate facility which is under UNFCCC. GCF came into existence from Cancun agreement and the pledges were not lived up to. 100 billion का जो commitment हुआ था वो हुआ नहीं है. Less than 10% is actually flowed. It is still funding projects. Okay, ma'am. All right, got it. Any more questions? So shall we go ahead with the projects?
So we have decided to give you a presentation. Like you need to make a presentation. Abha will give a topic. We will create a 5 group or 4 group as per the your opinion, and you can talk on Slack. Give your brief introduction on Slack. I'll create one channel to create a partners. So you can create a team of 5 people, and then we will give you a task after this, and you can share your presentation in 2-3 days, right, Sabha? Or one day. 2-3 days are enough because Saturday, Sunday is there. So Monday you can submit your presentation, and we'll share the topics after you create a group. Okay, ठीक है. So फिर I will not share it right now. What I'll do is You I'll give it can- to. Shall I share it, Pratiksha? Yeah, just give them a brief right now, so Okay, they will understand what it is exactly. ठीक है. So we spoke about कहाँ चला गया? I press it very often actually. See, so we read about Copenhagen pledges, and we read about Kyoto Protocol. We spoke about NDC today. So what you do is little bit of groundwork, not much. It is just so that you get an idea. एक concept पढ़ा है, उस concept में actually क्या हो रहा है on ground में. So we have this is the list of what top GHG emitters. You have China at number 1, then USA, European Union combined होता है, India, Russia, Japan and Brazil. जो मैंने star किए हैं, they are developing country parties. So China, India and Brazil, they're developing country parties, and USA, EU, Russia, Japan are developed country parties. So what the project for today is that, एक second में इसको minimize कर लूँ पहले, हाँ. So each group to find out the climate commitments the given country has made under Kyoto Protocol, Copenhagen Pledge and NDC. मतलब अगर ये आपको देखना है जो developed country party, let me again clarify it. Kyoto Protocol targets होंगे developed country party के लिए, developing के लिए नहीं होंगे. कोपेनहेगन प्लेज डेवलपिंग के लिए, डेवलपिंग कंट्री पार्टी के लिए होगी, और एनडीसी दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा. तो जो ग्रुप ए करेगा उसको इसके क्योटो प्रोटोकॉल टारगेट्स देखने हैं और एनडीसीज देखने हैं. जो चाइना को लेगा यानी डेवलपिंग देखेगा उसको कोपेनहेगन प्लेज देखनी पड़ेगी और एनडीसी अग्री. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. जस्ट गो टू द UNFCCC साइट, आपको लिंक्स मिल जाएंगे. ये देखना कि इसका कंट्री ने कितना टारगेट था. 5% कम करेगा तो कितना कम करना है इसको. कोपेनहेगन प्लेज इस कंट्री ने क्या करी है, और NDC इनकी वेबसाइट्स में भी अवेलेबल है. अदरवाइज यू पुट अ सर्च India's NDC, you will find what are India's NDC. So each group make on, I have made 5 groups. अगर आप 4 बना रहे हो तो go up to group B. Group E छोड़ देना, Japan. So group A takes USA, China, India and Brazil. So you make a presentation. Kyoto Protocol के targets is 1 slide, Copenhagen pledges 1 slide, NDC maximum 2 slides लेगा because India ने तो 8 कर दिए हैं, तो वो एक स्लाइड में अगर नहीं आए तो. So you'll have a maximum 4 to 5 slides का presentation. Just make it. We don't have time actually to make you present, so we'll assess it separately, and Pratiksha will share जो भी हमारे feedback रहेगा, या maybe one of the sessions I can share अगर कुछ ज़्यादा detailed है तो. ठीक है? So I'm done, Pratiksha. Okay, so we all can leave the group, and thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you so Bye. much. Have a great weekend. Thank you so much. See Bye-bye. you. Bye. Bye.